Children, today we will continue the electrochemistry and accept the first, that is Colorad's law and conductivity. Today we will discuss the Nernst equation. On page number is 64-65 NCERT. Nernst equation and electrode potential. It is also very important. First of all, cell. What is cell? A cell is the device which converts the chemical energy into electrical energy. And if the series of cells are present in a circuit, then it is called battery. So a battery is the series of many cells. What is the main chemical phenomena which occurs in a cell is the conversion of the chemical energy into the electrical energy. So must remember that Nernst equation is the important part, and we will discuss at the page number 64 and 65. Now, Daniell cell. It also converts the chemical energy into electrical energy, but the redox reaction is given like this. This one is the redox reaction which occurs in the Daniell cell. And if the electrical energy and has an electrode potential equal to 1.1 volt, the electrode potential is 1.1 volt, and the concentration of Zn2 plus and copper 2 plus ion is unity means 1, then such a device is called the galvanic cell or voltaic cell. So this type of the redox reaction occurs in the Daniell cell, and it is also called the galvanic cell or voltaic cell when the concentration of Zn plus ion and copper plus ion is unity and the voltage is 1.1. So now, how to represent this galvanic cell? The most important part is to represent this galvanic cell is this one. You might have read in class 11 that zinc, this one is the zinc Zn plus, and this one is the salt bridge. This is known as the anode and this is known as the cathode. So zinc dipped into the zinc ion and copper dipped into the copper ion, and what is this double line? This is salt bridge. So have you written all these? Take help from book also. How to represent the galvanic cell, how to know about the cell, batteries, everything. So turn over the page. Come here, that here is the representation of the galvanic cell. How to represent the galvanic cell? That is, a zinc rod is dipped into the zinc sulfate solution. Zinc rod, ये zinc rod है, it is dipped into the zinc sulfate solution. Copper rod dipped into the copper sulfate solution. You have read in class 11. And two solution, ये दोनों solution किससे जुड़ा हुआ है? Salt bridge से. ये salt bridge है, this one is the salt bridge. Salt bridge. This diagram is given in your NCERT book at page number 65. Now this one is the anode and this one is the cathode. This is the anode. Anode is called oxidation half, and cathode is called, this one is the cathode,
and this is called reduction half. Now the current will flow from this side. करंट किधर से किधर जाएगा, एनोड से इधर. इलेक्ट्रॉन माइनस मीन्स the electron will flow from left to right, that is a node to this cathode side, and the current will flow to the opposite side. This is the representation of the galvanic cell. And in short form, if you want to represent this galvanic cell in short form, then you have to write like this: Zn plus plus double oblique salt bridge and copper double plus copper. Now electrode potential, it is a very important term. What is electrode potential? Electrode potential is the, suppose that this one is an electrode. So this one is an electrode, so it has either tendency to lose electron or gain electron. So if it has the tendency to lose electron, then this electrode is called, the oxidation half, and if it gains electron, then it is called the reduction half. And if it loses electron, then it is called oxidation potential, and if it gains electron, then it is called reduction potential. The oxidation and reduction potential both are equal in magnitude but opposite in sign. Please see here that the electrode potential is the tendency of an electrode to lose or gain electrons. Tendency of to lose or gain electrons. If it loses electron, then it is called oxidation potential. If it loses electron, then it is called oxidation potential, and if it gains electron, then it is called reduction potential. Oxidation and reduction potential are equal in magnitude but opposite in sign. Means oxidation potential and reduction potential are equal. Means oxidation potential and reduction potential are equal but opposite in sign. Oxidation potential and reduction potential are equal but opposite. This one is the plus sign, then this one is the minus sign. If this one is the plus, then this one is the minus. So this is the representation of oxidation and reduction potential. Now equal in magnitude but opposite in sign. Generally the electrode potential is explained in terms of the reduction potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है. हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में निकालते हैं. एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन. किसी इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफिकल्ट है डिटरमाइन करने के लिए, कठिन है, नहीं निकाल सकते हैं. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया जाता है. रेफरेंस इलेक्ट्रोड में which one is the best reference electrode? That is SHE. SHE means what? Or NHE means what? SHE is the standard hydrogen electrode, NHE is the normal hydrogen. Both are same. SHE और NHE एक ही चीज है. जिसको आप SHE बोलते हैं वही NHE है, मतलब standard hydrogen electrode. Why we take the standard hydrogen electrode? Because its electrode potential is arbitrarily taken as 0. हाइड्रोजन से कंपैरेटिव किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं और आर्बिट्रली हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 माना गया, यानी उसके करस्पॉन्डिंग, उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं. तो एज वी कैनॉट डिटरमाइन द एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, द कॉमनली यूज्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज SHE और NHE. So please turn over the page. Now are called standard hydrogen electrode or normal hydrogen electrode, whose electrode potential is taken to be 0. जिसका electrode potential कितना के बराबर माना जाता है? 0. Now let us apply the Nernst equation to the galvanic cell. galvanic cell में हम Nernst equation कैसे अप्लाई करेंगे? galvanic cell में Nernst equation अप्लाई करने के लिए in galvanic cell the following reaction occurs at anode and cathode. गैल्वेनिक सेल में क्या रिएक्शन होता है? एनोड पर होता है. मान लो एट एनोड Zn ये ऑक्सीडेशन हो गया. ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, एंड एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस. So the
Zn gives the Zn 2 plus 2e, copper 2 plus 2e, copper solid is formed. Now overall reaction, anode पर what happens at anode? Zinc gives this reaction, copper ion gives this reaction, and overall reaction electrons को cancel करते हैं तो Zn Cu plus plus it gives Zn double plus plus Cu. This is the overall reaction. Overall reaction already written on overall reaction of the galvanic cell. Now if you want to apply the Nernst equation, to apply the Nernst equation for the EMF of the cell, so EMF is equal to E cathode minus E anode. This is the difference in electrode potential of cathode and anode, because the means cathode is in the right side. We know that the cathode is always in the right side. So EMF is equal to E right minus E left. E right minus E left. You might have studied in class 11 that how EMF is measured, electromotive force, that is equal to E right minus E left, that is E cathode minus E anode. Now please turn over the page and you can apply this on galvanic cell, that is Zn plus Zn. So Zn plus Cu plus plus, this gives Zn plus 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 C. Now the E cell is equal to E naught cell plus 0.0592 by n log Cu plus plus by Zn plus plus. So we take like this, that is E cell is equal to E naught cell and the concentration of this one, and if you write in this form, that is E cell is equal to E naught cell, if you take here the minus sign, then what will happen? 0.0592 by n is equal to 2 for this reaction. N is equal to 2 for this reaction. Why? Zn plus, take this reaction Zn Cu plus plus Zn plus 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 Cu. So Zn plus Cu plus plus Zn plus 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 Cu. So N is equal to 2 for this reaction. So E cell is equal to E naught cell minus 0.0592 by n log Cu plus plus by Zn. I'm sorry, this one is the Zn plus plus. Why we take here the Zn plus plus? Because लॉग का नियम क्या कहता है? लॉग का नियम कहता है कि यदि आप इसको ऊपर और इसको नीचे लाएंगे तो आपको यहाँ माइनस देना पड़ेगा. दिस इज द रूल ऑफ लॉगरिथम. लॉगरिथम का रूल है कि यदि आप Zn प्लस को ऊपर ले जाते हैं, कॉपर प्लस को यहाँ आपको माइनस देना पड़ेगा. तो ये दोनों इक्वेशन ई सेल के लिए चलता है, यानी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.0592 by n log Cu plus plus Zn plus plus, and E cell is equal to E naught cell 0.0592 by n log Zn plus plus by Cu plus plus. तो बस वाइंड अप. बच्चों ऐसा है कि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, जैसे ई सेल निकालने के लिए आप जानते हैं ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई राइट माइनस ई लेफ्ट करके आप आराम से निकाल लीजिए. ई राइट माइनस ई लेफ्ट, एन का वैल्यू कभी भी बिना इक्वेशन निकाले मत करिए. एन का वैल्यू राइट द इक्वेशन एट एनोड एंड कैथोड. एनोड कैथोड का रिएक्शन लिखिए और ई का वैल्यू निकालिए. ई मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऐसा कोई जरूरी नहीं इस रिएक्शन में एन इज इक्वल टू 2 था, दूसरे रिएक्शन में दूसरा एन इज इक्वल टू आ जाएगा.
तो वो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, इसमें हम लोग को डिस्कस करना है। और उसके बाद एक इक्वेशन और हम निकालेंगे इससे रिलेटेड, और रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच क्या रिलेशन है वो भी हम लोग को पढ़ना है। और इससे रिलेटेड फिर नेक्स्ट इक्वेशन का जो पार्ट है, इससे रिलेटेड फिर न्यूमेरिकल। तो ये सब जो बच्चे तैयार कर लेंगे उनको इजीली न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा, और उससे रिलेटेड वो इजीली न्यूमेरिकल बनाएंगे। क्योंकि 11 में जिनका पढ़ा हुआ है ये सब चीज़, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यदि कहीं पर प्रॉब्लम आता है तो कि बुक आपके पास है, बुक को ज़रूर पढ़ें और तब इसको भी दोनों को पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही।